ओके टिके कन्फर्म कर देबे मैंने ऑडियो क्लियर आछि आई थिंक क्लियर आछिबो के नेटवर्क इशू रहउछि मे बी हां एबे टिके कन्फर्म कर देला बेलन एबे टिके प्रॉपर एबे ठीक अछि ठीक अछि ऑडियो क्लियर परफेक्ट ठीक है नमस्कार समस्त को नमस्कार आर्य नमस्कार स्वराज नमस्कार प्रणाम शुभचिंता प्रणाम देविल हेलो हेलो धन्यवाद समस्त को एगेन सुप्रभात स्टार्ट करिवा आज क्लासेस ठीक अछि एगेन नमस्कार जगन्नाथ प्रणाम स्टार्ट करिवा आज क्लासेस प्रीवियस क्लासेस हम डिस्कस करूथिले previous topic जोटा हम कहछि यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पावर्स इंपीचमेंट ऑर्डिनेंस एंड क्वालिफिकेशंस विषय हम डिस्कस करूतले दिन आज क्लासेस रे क्लास 10 जोटा हम कहछे गत राति रो 9टा समय रे हम 9:50 समय नबार थिला जेहेतु नेटवर्क इश्यू स्टार्ट हे गला बहुत जोर रे वर्षा पई हम नै पनातले क्लास रो आज ताको कवर अप करिया प्राइम मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एजी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम डिस्कस करबा ठीक अछि ठीक है स्टार्ट करें क्लासेस परफेक्ट आज प्रथम प्रश्न है which article of the Indian Constitution empowers the president to appoint the prime minister प्रणाम प्रणाम देवी कृष्ण ठीक है परफेक्ट ऑडियो क्लियर आस्तबे पूरा परफेक्ट से कहि भारतीय संविधान क्यों धारा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्ति देवार क्षमता प्रदान वेरी गुड पे मैंने परफेक्ट आम कहे 75 1 कहे हाँ ना नहीं पे मैंने आर्टिकल 75 1 कहूँ कौन states that the prime minister shall be appointed by the president and the other minister shall be appointed by the president on the advice of the prime minister आगे प्राइम मिनिस्टर को किए अपॉइंट करेबे प्रेसिडेंट तापर परवर्ती समय रे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बा सॉरी जो अदर मिनिस्टर सब रहिसंती अदर मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर अलग अदर मिनिस्टर जो मान सब अच्छी से किए अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट का एडवाइस रे प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस रे प्राइम प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे which article meant that there shall be a council of ministers with prime minister at the head out to aid and advise the president प्रधानमंत्री नेतृत्व रे क्यों एक मंत्री परिषद रहिबो जहां राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देबो बोली क्यों धारा कहे प्रणाम प्रणाम सोनी वेरी गुड पे माने बुझिबो क्वेश्चन ठीक अछि से कहि जे प्रधानमंत्री को नेतृत्व रे एक मंत्री परिषद रहिबो ठीक अछि जहां राष्ट्रपति को हां नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ठीक अछि जे हम कहछे राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देबो बोली क्यों धारा कहे ठीक अछि पहले माने 74 1 ठीक अछि मु प्रॉपर जति में आर्टिकल मेंशन करिछि 1 बोली आर्टिकल 64 एक कोन कहूछि जे यहाँ अनुଯାयी प्रधानमंत्री को नेतृत्व रे एक मंत्री परिषद राष्ट्रपति को परामर्श देवे ना नहीं एतटा क्वेश्चन सब ओडिया रे पढिबा देखिया केते जन प्रॉपर्ली बुझो कि विरक्ति हो जाओ धारा 75 अनुଯାयी केंद्र मंत्री परिषद सामूहिक भावे कहा प्रति उत्तरदायी अटंती राज्यसभा प्रति लोकसभा प्रति सर्वोच्च न्यायालय प्रति
ना प्रधान सॉरी देशर राष्ट्रपति प्रति सीधा सड़क भाव वेरी गुड पे मैंने हम्म। परफेक्ट प्रणाम प्रणाम पूछा आम कहूचे लोकसभा है ना नहीं परफेक्ट आओ सेगला धारा 75(3) अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक भाव लोकसभा प्रति दायी रही है ना नहीं पीपल ऑफ इंडिया से कहला धारा 75(2) अनुसार व्यक्तिगत भाव मंत्री माने कहार प्रसन्नता बा प्लेजर पर्यंत निज पद रुहति जमती एबे तुम माने एग्जांपल गुड मॉर्निंग पायल माने एबे तुम माने एग्जांपल जस्ट देखि तो प्लेजर प्रेसिडेंट चाहिले जन को रिजाइन करे जन को रिजाइन एक्सेप्ट करि परिबे जन को रिजाइन न करि पारंती तांको प्लेजर हिसाब रे मिनिस्टर माने रहिबे तांको प्रसन्नता जबन से खुशी होचनी गोटे मिनिस्टर भल से परफॉर्म करूची तार बड़ कथा जे परफॉर्म न करूची नहीं हो धर्मेंद्र प्रधान जीव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गला आर्टिकल 75(2) अनुଯାयी मंत्री माने राष्ट्रपति प्रसन्नता पर्यंत पदवी रही था परफेक्ट अब मजे ओडिया रे पढ़ी क्वेश्चन उडा सब भारतर महा आईनज्ञ बा अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया पदवी संविधान रो क्यों धारा अंतर्गत सृष्टि करा जाय छी क्यों धारा धारा 74 78 76 88 वेरी गुड बेटा तुम सब जानी प्रॉपर्ली जानी कूटा आवश्यक बोली आना नहीं पर परफेक्ट संविधान धारा 6 देशर सर्वोच्च आईन अधिकारी महान आईनज्ञ अटॉर्नी जनरल एजी पदवीर व्यवस्था करे धारा 76(1) अनुଯାयी महा आईनज्ञ एजी भाव नियुक्त हेबा पाई व्यक्ति पाखरे क्यों योग्यता थिबा आवश्यक तांको पाखरे सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जज हेबार योग्यता थिबा दरकार नहेले पार्लियामेंट रो जणे सर ओडिया को कन्वर्ट करिया तो छोट भी न पिले तो बसी भाभी हुई कन्वर्ट कर धीरे धीरे एमती डायरेक्ट क्लास रे करवा कष्ट हाउ होचे क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कहूचे आने धारा 76(1) कहूची अनुଯାयी महान आईनज्ञ हेबा पाई सुप्रीम कोर्ट विचारपति हेबार योग्यता थिबा जरूरी पिले आने ओके धारा 88 अनुଯାयी मंत्री माने एवं आईनज्ञ संसदर उभय गृह रे क्यों स्वतंत्र अधिकार रही हाँ ठीक अच्छे नो इश्यूज आसिल पे सतन प्रश्न थी आम कहबार अधिकार अच्छे किंतु मतदान हेबार अधिकार नहीं वेरी गुड पे मैंने धारा 88 अनुसार मंत्री और महाआईनज्ञ संसद उभय गृह रे कहबा भाग नेबार अधिकार पाते किंतु भोट दे पारती नहीं एकालबेतम संशोधन आईन मंत्री परिषद सर्वाधिक सदस्य संख्या लोकसभा 15% मध्य सीमित करने को क्यों धारा जोग कर समस्ते 120 सेकंड स्किप कर दिया पे 120 सेकंड स्किप
ସତ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ ଇଂଲିଶରେ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ୁଛ ସତ କହିବ। आर्टिकल 75 एक कौचे हाँ नहीं पिले वेरी गुड हाँ से कहला 2003 रे एकालवे संशोधन आईन धारा 75 एक क जरिए मंत्री परिषद आकार 15% रे सीमित करथिला योजना जेके ठीक अछि से कहला व्हिच आर्टिकल आउटलाइन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू द प्रेसिडेंट प्रशासनिक निष्पत्ति संबंध राष्ट्रपति को अवगत कराइबा पई प्रधानमंत्री को कर्तव्य संविधान क्यों धारा रे बने क्यों धारा रे बने ब्लॉक लिखी नहीं तुम ब्लॉक कहीं ब्लॉक ही नहीं परफेक्ट धारा 78 आर्टिकल 78 परफेक्ट लेवन so article 78 defines that the duties of the PM include the communicating administrative decision and the legislative proposals to the president तार 78 प्रधानमंत्री कर्तव्य गुड़िक स्थिर करे जेपरिक राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करबा माने तो इन्फॉर्म करबा हु करंटली होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द एजी फॉर इंडिया जुलाई 2026 2026 मसे जुलाई मास सुधा भारत महा आईनज्ञ अटॉर्नी जनरल पदवी किए कार्य करूछंती वेरी गुड आर वेंकटरमणी हाँ नहीं वेरी गुड रिअपॉइंट होती श्री आर वेंकटरमणी सर्विंग एज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया हैविंग बीन reappointed for 2 years extension हाँ नहीं पे जस्ट पूजा तुम एक कथा पुत्र ना आओ in the Indian parliamentary system the PM is formally designated as dash भारतीय संसदीय व्यवस्था रे प्रधानमंत्री को आनुष्ठानिक भाव कौन भाव अभिहित कर हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट हेड ऑफ द जुडिशियरी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हेड ऑफ द गवर्नमेंट हाँ नहीं स्टेट कहले बाकी सब तो प्रेसिडेंट अच्छी मोस्टली है नहीं the president is the head of the state the PM is the head of the government and the chief executive of the nation राष्ट्रपति राष्ट्र मुख्य होते हैं प्रधानमंत्री होते सरकार का मुख्य हेड ऑफ द गवर्नमेंट हाँ नहीं what are the three principal the tiers or categories of minister in the Union Council of Minister in India भारतीय केंद्र मंत्री परिषद मुख्य तीनोटी स्तर व श्रेणी कौन कौन अटे perfect cabinet minister ministers of state deputy ministers perfect 11 the Union Council of Ministers comprises of 3 tiers cabinet ministers minister of state and deputy ministers केंद्र मंत्री परिषद मुख्यतः कैबिनेट मंत्री राष्ट्र मंत्री एवं उपमंत्री यही तीनोटी स्तर को निकटित जितने भी मोस्टली क्वेश्चन ऑप्शन गुड़ा छोट आने चेष्टा कर बट मोस्टली तो हो पारुनी किसी हो जाऊँ what is commonly referred to as the kitchen cabinet जोटा कहूँ in the Indian political and administrative framework भारतीय राजनीतिक व्यवस्था रे किचन कैबिनेट बा किचन कैबिनेट कहा को कहा जाए वेरी गुड perfect lands kala small information body of core cabinet minister and trusted confidence surrounding the prime minister pranam Vishwajit the kitchen cabinet is an informal in a cabinet consisting of the prime minister and a few trusted cabinet colleagues for who wield real decision making power
Sikala, what constitutional consequences follows immediately upon the resignation, death, or loss of majority of the prime minister? प्रधानमंत्री को इस्तीफा मृत्यु बा संख्या गुरु हराइबा परे मंत्री परिषद उपरे कौन प्रभाव पड़े? वेरी गुड. The councils of ministers automatically stands dissolved. नहीं पर how prime minister or PM is head of the council of ministers, therefore their resignation, death or loss of majority results in the automatic dissolution of the entire council of ministers. प्रधानमंत्री को इस्तीफा बा मृत्यु हेले समस्त मंत्री परिषद स्वयं चालित भाव भंग हो जाए भांगी जाए. Which article of the constitution deals with the powers, privileges and the immunities of parliament, its members and committees, which is also extended to the AG? संसद यार सदस्य और महाआईनज्ञ विशेषाधिकार प्रिविलेज संबंधी धारा क्योंटी? परफेक्ट प्लान है. आर्टिकल 105 में आना नहीं प्लान. Which by article, article 7 outlines the powers, privileges and immunities parliament and its member, which by virtue of article 88 also extend to the AG. Can the AG for India vote on any resolution or bill during proceedings in Lok Sabha or Rajya Sabha? नमस्कार प्रियांजलि. प्रणाम रोजी मेहर. प्रणाम. तो दुई जनकर देखा ना नहीं. प्रणाम शुभम. वेरी गुड. Some shortcut answer that no. The AG has the right to speak and participate, but strictly no right to vote. So stick program discuss करते article 88 under है ना. What is the fixed tenure of the office for the AG for India as prescribed by the Constitution? Perfect. No fixed tenure, holds office during the pleasure of the president. Perfect. Who assists the AG for India in legal duties along with the additional officer appointed by the government? Good morning, Namaste, sir. Ram. Perfect. And A answer is perfect. SG, the Solicitor General of India and the Additional Solicitor General. Perfect plan. Which article mandates that all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president? भारत सरकार को समस्त कार्यकारी पदक्षेप राष्ट्रपति नाम प्रकाशित हेबो बोली संविधान केउ धारा कुहे? प्रणाम. गुड मॉर्निंग पीहू. Perfect. Article 77 answer Article 77 says that all executive actions of the government of India shall be formally expressed to be taken in the name of the president. The PM Narendra Modi set a historic milestone in June 2026 by becoming dash 720 number प्रश्न अच्छे हमें. आउट मानी भी जुलाई हस्बैंड पे जुलाई 25 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे हिस्टोरिक डिसीजन कौन अप्रूव करते? समस्त आंसर दियो. यार भी आंसर दो.
India's longest serving continuously elected Prime Minister. ठीक है आंसर दे दो पिलाने समस्त आंसर दे दो संडे स्पेशल स्टोरी गोटे देखनी पिलाମାନଙ୍କର ପୁରା ମନ ରହିଗଲା ଷ୍ଟୋରି କଥା ଆଉ what is the fundamental structural difference between the council of minister and cabinet ସେଇ କଥା କହୁଛି ତାଙ୍କ ସରକାର ରେଜିଗ୍ନେସନ ହୁଏନି ସେଇଟା ଭୁଲିଲେ ठीक कथा कहले पूछा पायल दे जाओ प्रणाम प्रणाम सुमी ओ परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर दियो परफेक्ट ले माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज लार्जर एनकंपासिंग बॉडी ऑल टायर्स उठा कोजे whereas cabinet is a smaller elite core group of senior cabinet minister है ना नहीं the council minister is a large body including all three tiers of minister whereas the cabinet is a smaller compact core group consisting only of cabinet minister who make major policy decisions can a person which not kahichi a member of either house of parliament to be appointed as a union minister or prime minister under article 75 प्रणाम प्रणाम सुस्मिता प्रणाम सुचिस्मिता पिला सब आसगला नहीं पिला सब तुम मैंने सब टाइम लेट कर दो तुम मान क्वेश्चन केतटा सब माने पछ रही जाउ but they must become a member of either house of parliament with 6 months from the date of appointment perfect Article 5 states that the minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the either house a parliament shall at the expiration of that period cease to be minister who administers the oath of office of and secrecy to union minister before they assume charge of their respective portfolios or D is the proper answer speed up 0 as one later join करछन how under article 53 the president administers the oath of office and secrecy to the union minister before they enter upon their office perfect under article 76(3 what the right of audience is granted to the attorney general in the courts of India କାଲି ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ କାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଛି ପିଲାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଲାନି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏତେ ଖୁସି ଖବର କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ ଶହେ ଯିବା ପ୍ଲିଜ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ଯିବା ହଉ ଏ ତ ଆନ୍ସର ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ କୋର୍ଟସ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା మన ఆర్టికల్ 76(3 so said that the performance of his duty attorney general have the right of audience in all courts in the territory of India perfect is the AG for India considered a full-time government servant and the barred from private legal practice perfect Very good. I'm going to know the AG is not a full-time government servant and is not debarred from private legal practice. So it does not conflict with the government cases. The AG is not full-time counsel for the government and does not debar private legal practice, but there is no conflict of interest with the government cases.
which article kala क्यों article of the Indian Constitution explicitly mandate that there shall be a council of minister with the prime minister at the head to aid and the advise the president. नहीं सब ऑप्शन आइदर छोट करिवार अछि सब ऑप्शन आइदर बड़ करिवार अछि तो मु गोटे उपाय अछि सब ऑप्शन ही बड़ कर देले पाइला काम सब हां नहीं परफेक्ट आर्टिकल 74(1) जोटा काम को परफेक्ट पढ़त प्रश्न को आर्टिकल 74(1) provides that there shall be a council of minister with the prime minister at the head of the perfect. Under article 74(1) how is the prime minister of India appointed? Perfect. Appointed by the president of India. According to article 73, the Union Council of Ministers is collective responsible to which of the following? Perfect. Lok Sabha. Individual minister hold office during the pleasure of whom as specified under article 73(2). Perfect. The president of India. Under article 74, who administers the oath of office and secrecy of the members of the Union Council Minister? Perfect. C is the pronounce the president of India. What is the maximum statutory time limit within the which a person appointed as a minister must become a member of either houses of parliament as a per 75? Perfect. Which constitutional amendment act capped the total number of ministers, including the prime minister, of to 1% of the total members of Lok Sabha? Article 73(1)(a). For 95 the answer for the question. Under Article 1B, members of Parliament disqualified under the 10th Schedule Anti-Defection Law is also disqualified from being appointed as a TES. धारा 75(1) ख अनुଯାୟୀ ଦଳତ୍ୟାଗ ବିରୋଧୀ ଆଇନରେ अयोग्य सांसद क्यों पदवी पाई मध्य अयोग्य होंती? दुई जन पिला तीन जन पिला परफेक्ट आंसर दीचो मिनिस्टर इज द आंसर मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा तो बहुत दूर रखता बहुत आगो को तुमने पढ़े जाइछो आर्टिकल 75(1) बी प्रोवाइड दैट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्राइब्ड अंडर द 10th schedule is also disqualified from being appointed as the minister. Okay, which article of the Indian Constitution provides for the appointment of the AG for India, the highest law officer of country? For Article 76, the answer. Under Article 76(1), what specific judicial qualification is mandated for a person to be appointed as the AG for India? Repeat here which question थोड़ा का ताकि क्या चाहूँ must be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. Perfect for the question. Under Article 76(3), what right of audience is granted to the AG
in the performance of official duties. Perfect. जो D is our answer. Right of audience in all courts in the territory of India. Perfect. What is the fixed tenure of the office of the for the Attorney General for India as prescribed by the Constitution? Perfect. No fixed tenure. Holds the office of the ruling pleasure of the president. Perfect. तांको इच्छा अनुसार पर्यंत रहिबे. Article 83. What constitutional duty is assigned to the Prime Minister regarding the administrative information? To communicate to the President all decisions of the Council of Ministers relating to Union administrative and legislative proposals. Article 83 Article 88. What parliamentary rights are granted to Minister and the AG? Right to speak and participate in proceedings of the House joint sittings and committees without the right to vote. कही पारिबे किंतु vote देबे ना. Article 88 grants minister and which article outlines the powers, privileges and immunities of Parliament and its members, which also extended to the AG under Article 88. Perfect. So I punch the answer. Who currently serves as the AG? The India. Question repeat AG. In the Indian political hierarchy, how is the Prime Minister formally positioned? जो करंट प्राइम मिनिस्टर किए होल्ड करुच्ची से गुड़ाक भावी दूसरी पूर्व क्वेश्चन बनी भाविक आगू पुणी से क्वेश्चन पकई दूसरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आंसर प्रश्न को जीवा द हेड ऑफ गवर्नमेंट. परफेक्ट. व्हाट इज द फंडामेंटल फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? The cabinet is a small core group of senior ministers making major policies, while Council of Ministers is a largely encompassing body of all ministers. What happens to the Union Council of Ministers if the Prime Minister resigns or passes away? Speed of Java. Perfect. Stands automatically dissolved to creating a vacancy for a new government. Perfect. Can a person who is not a member of either house of parliament to be appointed as a minister under Article 5? Repeat he जाइए. ताकि भी 10टा वाली क्वेश्चन रिपीट ही जाइए. 10टा ऊपर है 15टा वाली ही जाइए. ताले ये प्रॉब्लम कौन होच बिला जानिछ माने मु तळे फास्ट गोटे नॉर्मली टाइप करूची गोटे जगह कोठी टाइप करूची तापर ग्रामरली ताकू कोन करूची माने ग्रामरली रे ताकू ग्रामेटिकल एरर गुडा को फिक्स करूची. ठीक अछि. तो एरर फिक्स करला बेले त कोन कहलो मु कॉपी करूची डबल कॉपी कर दूची बेले बेले से प्रॉब्लम टा होछ. ठीक है नो इश्यूज. Who assists the AG for India in legal duties alongside additional officers? double नहीं कॉपी under Article 3 all executive actions of the government of India formally expressed to be taken in whose name Khangana. तापर कौन कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पकाऊँ ताकू मु कौन करुँची नंबरिंग करुँची. तो नंबरिंग कला बेले जेहेतु डबल कॉपी कर दूसरी ताकू
व्हाट इज द हिस्टोरिक रेकॉर्ड अचीव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एटा जानि छ समस्त रिपीट हे क्वेश्चन छाड़ा नेक्स्ट टाइम देखियो पड़ो ठीक से हां व्हाट इज द constitutional status of the cabinet within the original text of the Indian constitution 1950 हां ठीक है काली क्लास ना काली दिन समय मैं एकाथरे 200 क्वेश्चन पाखा बनी this is the right answer. It was not mentioned in the original text, was formally added by later by the 44th Amendment Act 1978 to Article 3. Which clause of Article 74 empowers the President to require the Council of Ministers to reconsider their advice either generally or otherwise? Article 64 provision for particular प्रश्न को जीवा हाँ the provision to Article 64 added by the 44th Amendment Act 1978 empowers the President to require Council of Ministers to reconsider their advice for प्रश्न को जीवा and Article 74(2) is the advice tendered by the Minister to the President required into requested by any court. No. The question whether any what advice was tendered by Minister to the President shall not be required into any court. Perfect. According to Article 53, the Prime Minister is appointed by whom and who appoints the other ministers? Good second plan. How? Article 53 ministers, the Council of Ministers are the collectively responsible to which institution? House of the People. Lok Sabha is the right answer. बोला ना प्रश्न को जो बहुत सारे क्वेश्चन फुटेज थे on Article 53 who admits the oaths of office and secrecy of a union minister? क्लास कत टाइम चलेबो जेपन 30 क्वेश्चन सरी नहीं 28 जेपन होई छ हो बितर आंसर प्रश्न को जीवा on Article 5 what is the maximum permissible duration a non-parliamentary can minister without getting elected to parliament? Parvati 6 months is the right answer. The 91st Constitutional Amendment Act 2003 added the purchase Act 1 restrict the size of the Council of Ministers to what percent of the Lok Sabha strength? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होता पे हम टिक के मोड में चेक कर दो छी प्रॉब्लम है इस पे बहुत क्वेश्चन रिपीट है गोटे सेकंड बाहर कर दो आउट पीडीएफ बाहर कर दो गोटे सेकंड में बैकअप पीडीएफ में बाहर कर दो छी
पॉलिटिकल पड़ेगा बैकअप पीडी बाहर गोटे सेकेंड पे परफेक्ट फाइन हाँ बैकअप पीडी अच्छे जोटा मत पॉलिटिकल डिस्कशन करदे आज मत एचजीएससी ऊपर मोस्टली जी क्वेश्चन बाहर कथा बाहर कर बट मत 2-3टा टॉपिक मिसई कर ही बाहर करा पड़ो सरी पाखा 75टा क्वेश्चन बाहर करी 75टा तो बाहर कर बाकी 50टा सेमती नॉर्मली जनरेट कर पाखापाखि 20टा खंडे आउ खातर बाहर करते आउ केतटा बही बाहर करते प्रोब्लेम कौट रहा ठीक अच्छे प्लीज दर आंसर पे प्रश्न को जी हाँ भल क्वेश्चन अच्छी कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज लिंक टू भल क्वेश्चन अच्छे टेंशन नहीं भल क्वेश्चन अच्छे वेरी गुड पीआईएल ना नहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना नहीं कहे 1980 ना नहीं हाँ हूँ आम तो फॉलोइंग द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सन इंडिया यहाँ आसला बीएड क्वेश्चन ना यहाँ बीएड क्वेश्चन बीएड पिला केतटा क्वेश्चन CAG perfect plan हाँ which constitutional amendment act is known as the Nagarpalika Act ठीक है कॉन्सेप्ट बाहर क्वेश्चन पचार दूसरी के भी पे माइंड करें हो प्रणाम 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 भाई गुड आफ्टरनून under which article of the official language of the union described perfect 343 answer first of Pujiba who can remove the chairman of UPSC President of the answer Prathos Kojima. Which article provides for a common high court for 2 or more states? This is the answer Prathos Kojima. The Sarkaria Commission was set up to study which of the following? Very good center state relations जोटा कमी कहूचे ना नहीं पिलवान हो कि 1923 ना नहीं What is the maximum number of days within which Rajya Sabha must return a money bill? Which article empowers the president to issue an ordinance?
सो 120 सेकंड स्किप कर दिया, पर 120 सेकंड स्किप कर दिया। परफेक्ट। हाँ, हु डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर ऑफ यूनियन? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ठीक अच्छे आनिबा नो इश्यूज। स्टेटमेंट वाइज हेले कोन होछ ना क्वेश्चन बहुत बड़ बड़ होइछो, सेते मु मोस्टली आनुनी। फर्स्ट कांसेप्ट क्लियर कर दोछ, तापर तो प्रैक्टिस टाइम रे आनिबा। परफेक्ट। 24 जनवरी 1950। परफेक्ट। अब which article constitute related to the abolition of titles? Perfect. Article order is the right answer. How many times was the preamble of the Indian Constitution amended? समझ टिके 120 सेकंड स्किप कर देला पे 120 सेकंड स्किप कर दियो। बहुत पिला पछरे रही छ तुम माने। सो जो 120 सेकंड स्किप कर दिया। हां परफेक्ट। प्रश्न को जिबा। Who is the administrative head of the state legislative secretariat? Perfect. Oh. Double jeopardy. So double jeopardy means no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Which article provides? Perfect. Article put is the right answer. Very good. So Nabila. Article code 2. Oh. Which article of the Constitution deals with the interstate councils? Very good. 263 is the right answer. Who is appointing authority? Who is the appointing authority of the district judges? Pranam. Renata. Perfect. Governor. What is the minimum strength of a state legislative assembly as per the Constitution? Pranam Mystery. Set his the answer. Which one on the right was decided by the Supreme Court as the gold chain? Gold chain माने बेकर सुना चेन नहीं, ठीक है अलग चेन कथा कहूँ। गोल्डन ट्रायंगल जो टका में कहूँ माना नहीं पिला। वेरी गुड। Who act as the channel of communication between the governor and the council of ministers? पीडीएफ दरकार है निश्चित पीडीएफ दे दी कंप्लीट हो जाओ सेशन हम दे दी सी मिनिस्टर the power of judicial review in India is less effective than in US because kahinki because of dash. Perfect. India follows procedure established by law. The US कौन करे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है पर भारत रे आईन द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसरण करा जाउथिबरे सीमित है नहीं। The contingency fund of India is at the disposal of भारतर आकस्मिक पांटि बा contingency fund कहार अधीन रहे। परफेक्ट माने वेरी गुड।
Which schedule was added to the Constitution by the first Amendment Act 1951? Skip 120 seconds, skip 120 seconds, skip पे लेवाने. Who provides the model code of conduct for political parties during elections? Election Commission, perfect. Under which article is the annual financial statement budget presented? Perfect. Which constitutional body is known as the bulwark of the democratic system in India? Very good. All of them. Who appointed the state election commissioner? Governor, perfect. The lame duck session refers to? Perfect. The last session of an existing parliament after a new one is elected. Okay. Which article prevents double punishment for the same offenses? Double jeopardy. No. Perfect. Very good. Either answer. Article 20 is the answer. Who is the first law officer of state? Advocate General. Perfect answer. How many fundamental rights were originally there in the Constitution? Perfect. Which constitutional amendment is related to reservation for AWS economical weaker sections? Perfect. 103 is the right answer. So 3 the Amendment Act 2019 provides certain procedures for perfect. What is the minimum duration for which national emergency can be approved by Parliament at once? Who is the final authority to decide on the disqualification of a member of Parliament on grounds other than defection? Which article is related to the separation of powers between the state and union? Perfect.
who can extend the life of Lok Sabha during a national emergency? Parliament is the right answer. Which article of the Constitution deals with the right to form association or unions? Article 26 is the right answer. Who appoints the Controller Auditor General, a CAG of India? That's it is our answer. What is the tenure of the Advocate General of a state? What is the pleasure of the governor? DPSP of state DPSP kochi are non-judiciable. This means perfect. Under which article can Parliament legislate on a subject in the state list in the national interest? Non-enforceable. Very good. Perfect. Article 14 is the correct answer. Who determines the quorum for the Parliament? Very good. Constitution is the right answer. Which article empowers the High Court to have superintendence over all courts within its jurisdiction? Sorry. Speed up, sorry. Saturation of approximately is the answer. Article 227 is the answer. Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? Class sorry. Right to information RTI Act is which type of right? Perfect. Both A and B is the proper answer. Who administers the oath of office of the Chief Justice of India? That is the answer. Mixed question anivi. Take a time hill and which constant I have not added the word socialist to the preamble? देखो इवनिंग आने चेष्टा करिए ठीक है
टाइम होने ना टिके काली रात्रि टिके प्रोब्लेम हो गला मुंड मुंड बिंदुला वर्षा रे ओदा हे जाइथिली भिजी जाइथिली सेति पे मु आनी पाली द प्रो टर्म स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय perfect line based on answer president goes perfect protest ko jiba which article of the constitution deals with the abolition of untouchability से सब पहले एक्सपेक्ट करूँ आज क्लास समस्त बुझीपार जब बुझीपार निश्चित क्लास टी को लाइक करने भूलवा ना भिडियो को लाइक करने भूलवा थैंक यू समस्त जगन्नाथ सार सेसन बांधव थोड़ा जननी इवनिंग चेष्टा करुच्ची मिक्स कर गोटे क्वेश्चन नापी ठीक अच्छे चेष्टा करुच्ची मिक्स करके किसी क्वेश्चन नापी चेष्टा कर ठीक अच्छे मैंने थैंक यू समस्त हाँ जय जगन्नाथ सारे सेसन हाँ ठीक अच्छे स्टोरी हम रात स्टोरी कह ठीक अच्छे पे स्टोरी हम ठीक अच्छे स्टोरी हम राति हम सर आम उपर रागी ना ना क्या रागिनी पे हे रात तुम टाइम टाइम हो चांस स्टोरी ठीक है पे श्रेया शोई श्रेया सरला बेल क्लास सरला ठीक अच्छे पे सारे सेसन ठीक अच्छे एगेन धन्यवाद जय जगन्नाथ सारे सेसन बांधव थोड़ा जर्नी जब क्लास टी भल तो निश्चित वीडियो को लाइक करिए भूलिए नहीं थैंक यू समस्त शुभ अपराह्न।